जय जगन्नाथ। वेलकम टू प्रभात फिजिक्स। तो 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस सेक्शन रे टॉपिक अछि द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम ए सीरीज कॉम्बिनेशन। सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन रे असंती n नंबर ऑफ सेल्स, n number of cells having EMF E and internal resistance R. They all are connected in a series with a load resistance R. On what condition it gives maximum current? On what condition it gives maximum current? तो करंट का फॉर्मूला I टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF क्या है? टोटल EMF is any total EMF any total EMF any total internal resistance total internal resistance total internal resistance क्या है? आद्यास क्या है? R plus n टाइम्स आद्यास क्या है? NR। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज NR। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है? टोटल रेजिस्टेंस क्या है? R प्लस R डैश क्या है? R प्लस NR। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। नाउ टोटल EMF करंट इज टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF इज NE बाय टोटल रेजिस्टेंस इज R plus NR। ओके, दिस इज द R plus NR टोटल करंट। इट करंट का फॉर्मूला आसेला एया। तो केस क्या है? इफ NR लेस देन R, NR means total internal resistance is much less than load resistance। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस यदि लोड रेजिस्टेंस ठारो बहुत 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 कम हुए then NR neglected। NR neglected तो I क्या हो जाएगा? NE by R, NE by R। तो करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सेल। करंट depends on number of cell। combination is useful। combination is useful। okay, second case 1 case 2 क्या है? if NAR is greater than R, that means total internal resistance is much greater than load resistance। तो load resistance are neglected। ओके, तो I क्या हो जाएगा? NE by NR, NN कैंसल, तो I क्या हो जाएगा? E by R। तो in this situation current is independent of number of cell। current is independent of number of cells। combination is not useful। combination is not useful। okay भाई, तो this the series combination is useful को condition रे when load resistance is much less than when total internal resistance is much less than load resistance, then combination is useful set maximum current। if total internal resistance is greater than load resistance, तो करंट इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल। गोटे सेल जोड़ले जेती करंट आसीबो, 10टा सेल भी सेती करंट आसीबो। तो व्हाई काहे कि हम 10टा सेल किनिया पैसा देकरी। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का कांसेप्ट। देन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? पैरेलल
combination. In parallel combination, second figure, in parallel combination क्या है, रिवर्स राशि आ रहा. पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस. फॉर्मूला सेम, करंट का फॉर्मूला क्या है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस. ओके, तो इन दिस सिचुएशन देखिए, तो n number of cells having EMF E and internal resistance R. n number of cells having EMF E and internal resistance R connected in parallel supply current to a load resistance R. In this situation, in parallel combination of potential is same. Potential in both all cells are E. तो total EMF क्या होगा, total EMF equal to E, not any E. Total internal resistance क्या दिया वो, total internal resistance, total internal resistance क्या होगा, 1 by R dash equal to 1 by R plus 1 by R plus n times. तो भाई क्या है, 1 by R dash क्या है, n by R, तो R dash क्या है, R by n. This is the total internal resistance and load resistance is R. तो total resistance क्या होगा, total resistance क्या है, R plus R dash, R plus R dash is R by N. This is the total resistance का फॉर्मूला क्या है, R plus R by N, total resistance. तो करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन केतना आସୁଛି, आइडेंटिकल सेल होଉଛି, तो EMF is E by R plus R by N. ओके, तो केस भी आसी जो टू केस. तो फर्स्ट वन, इफ R is less than R by N, तो लोड रेजिस्टेंस रिवर्स आसीबो, परसेंटेज रिवर्स आसीबो. लोड रेजिस्टेंस ता जदी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस थारो बहुत 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 कम हुए तो R लोड रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड. तो भाई करंट के आसीबो, आई के आसीबो E by R by N equal to NE by R. In this situation, current is depends on number of cell. Current depends on number of cell. Combination is useful. Current depends on number of cell. Combination is useful. Okay. Combination is useful. Current develop होता है कौन से होची? If R is greater than R is greater than R by N. R is greater than R by N आसी जाउची, तो R by N neglected, R by N is neglected, R by N neglected है, तो आसी जाओ कौन थी, I equal to E by R. E by R. That means current is independent of number of cell. Current is independent of number of cell. Combination is not useful. Combination is not useful. Not useful. Okay. So parallel combination is useful if R is less than R by N. ठीक है, R is less than parallel combination R load resistance, if load resistance is less than R by N, तो parallel combination is कौन useful. Okay, clear, दो condition. Then mixed combination. Mixed combination क्या है? Under what condition it gives maximum current? Mixed combination and under what condition it gives maximum current?
लास्ट टॉपिक मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन क्या है भाई? तो ऐसे होता है, सॉरी, cells, n number of cells having EMF E, internal resistance R. empty m number of रो है, ओके। तो इन वन रो गोटे रो रे n number of cells अछि having EMF E and internal resistance R एमटी अछि। तो एई टाइप रो m टा रो अछि। तो एक को कंडीशन ने दिस गिव्स मैक्सिमम करंट, अंडर व्हाट कंडीशन इट गिव्स मैक्सिमम करंट। तो टोटल EMF इन ए रो इज NE, total EMF on one row is NE. This type of M row connected in parallel, that means the final total EMF is this. The final EMF total EMF कितना है वो E. One row रो गोटे रो रे total EMF होची NE. This type of M number of row connected in parallel, that means total EMF is NE. Total internal resistance in a row, total internal resistance in a row, गोटे रो रे total internal resistance कितना आसीबो R plus R plus up to n times. So this is NR. गोटे रो रो total internal resistance कितना आसीबो NR आसीबो, एठी भी NR आसीबो, एठी भी NR आसीबो। गोटे रो रो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस NR आसी। तो दिस टाइप ऑफ m नंबर ऑफ रो कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस टाइप ऑफ m number of rows connected in parallel. तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R' कितना आसीबो 1 by NR plus 1 by NR plus up to m times 1 by R' कितना आसीबो m by NR, R' कितना आसीबो NAR by m. NAR by m, NAR by m is total internal resistance. NAR by m is total internal resistance. तो बेटा टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा ना? एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस सप्लाई है तो ना जी, लोड रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस प्लस NR by m और एलसीएम m MAR प्लस NR एमडी में ही बनेगा। ओके, MAR plus NR it's by M. This is the total internal resistance. भाई करंट क्या होगा? करंट का फॉर्मूला क्या है देखिए, तो करंट टोटल EMF by टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF क्या है? NE by टोटल रेजिस्टेंस इज MAR plus NR by M. तो करंट क्या है? MAR सॉरी MNE by MAR plus NR. This is the current condition. This M into N is total number of cell. Number of cell in one row is N, and this type of M row connected in parallel. So M into N is total number of cell. So this is the total number, Mn is total number of cell. Under what condition mixed combination gives maximum current? The great.
under what condition mixed combination gives maximum current? तो पार्ट भी कही परिबी when total internal resistance equal to external resistance. पार्ट रे कही दउची when total internal resistance equal to total internal resistance. This is total internal resistance of the system combination. Total internal resistance when equal to load resistance. कथार मन रख total internal resistance equal to load resistance, then mixed combination gives maximum current. Why sir? केमती सर लॉजिकली प्रूव करतो? प्रूव करिवा under what condition mixed combination gives maximum current? नीट राष्ट्रीय जेरे राष्ट्रीय क्वेश्चन बोर्ड नहीं सिलेबस रे. तो when load resistance equal to total internal resistance, in this situation mixed combination gives maximum current. So how? MAR equal to NR, the condition N capital R equal to NR. This is the condition. This condition रे, this situation रे mixed combination gives maximum current. तो लॉजिकल शो करिए. तो करंट का फॉर्मूला क्या है भाई? MN MN जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स E by MAR plus NAR. It gives maximum current. The current is maximum. I is maximum if this is minimum. Hello, क्या है सर? Is minimum. I maximum if this denominator is minimum. It is minimum. Under what condition this is minimum? This is minimum भाई. बचपन क्या है? अभी लगा क्या है? रूट MAR का स्क्वायर तो सार क्या है? सार पागल हो गया है. ओके, टोपी लगा दिया. ओके, MR को रूट MR रूट. तो अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अच्छी -2ab प्लस 2b लगे नहीं भाई मन को. केतो करबी? MAR रो रूट रो स्क्वायर प्लस NAR रो रूट रो स्क्वायर -2ab 2 MAR रो रूट NAR रो रूट अगर प्लस 2ab 2 MAR रो रूट NAR रो रूट. हेलो, ये क्या है सर? दे दिया 200 रुपया, ले गया 200 रुपया भाई, बैलेंस हो गया बराबर. तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या है भाई? MAR का रूट माइनस NAR का रूट का स्क्वायर प्लस क्या है? 2 MAR का रूट NAR का रूट. Current is maximum if denominator is minimum. This is minimum if this is 0. If this is 0, ये 0 अच्छी MAR रो रूट माइनस NAR रो रूट रो स्क्वायर. If this is 0, this is equal to 0. This is 0 means this is minimum. तो नेगेटिव असले कौन है? This is minus 5 हो 5 minus 5 स्क्वायर प्लस 5 25 मिलो. This is 0. एटा 0 ही जाउची तो कोन जाउची? एटा 0 हे गेले एटा मिनिमम हो. तो 0 हेले कोन देखो एटा रूट स्क्वायर अछि. रूट कर देली MAR equal to NAR equal to 0. MAR root equal to NAR root. टॉपिक का खुली दो. MAR equal to NAR आ गया भाई. When this is 0, if MAR equal to NAR, MAR equal to NAR, this is 0 होगा. This is 0 होले MAR plus NR minimum होगा. अब MAR plus NR minimum होले current maximum होगा. So this is the condition. That means R load resistance equal to NAR by M. So NAR by M is total internal resistance. So this is the concept. Mixed combination gives maximum current when load resistance equal to total internal resistance or MAR equal to NAR. Jai Jagannath.